Hello everyone. Welcome to the Hindu editorial analysis session. Extremely sorry, last data session I kari par nathile because of paucity of time and some important work. Last data week ro jaha important topic achi se sabu ame cover kar deba in the upcoming sessions. Kichi kichi kariki se sabu topic ko mu cover up karibi. So don't worry for that. Ame a week ro 16 to 21st September 16 to 21st September ର ହିନ୍ଦୁ ଏଡିଟୋରିଆଲ ଆନାଲିସିସ୍ କ୍ଲାସ୍ ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏଥିରେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍ ଅଛି, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ରିଲେସନ ରିଲେଟେଡ୍ ଟପିକ୍, ସିକ୍ୟୁରିଟି ଇସ୍ୟୁଜ୍ ଏଣ୍ଡ ଡେମୋଗ୍ରାଫି ରିଲେଟେଡ୍, ଇକୋନୋମି ରିଲେଟେଡ୍ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ଏଣ୍ଡ ମେନି ଅଦର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ଆର୍ देयर। ये ସବୁକୁ ଆମେ ଆଜି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ସୋ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉମାନେ ନୂଆ ଲର୍ଣ୍ଣର, ଯୋଉମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ କ୍ଲାସ୍, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଷ୍ଟ ବେସିକ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍। Why current affair? आम करंट अफेयर्स को एते अधिक इंपोर्टेंस कहीं दौचे? मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट जदि आम देखा बर्तमान प्रिलिम्स एज वेल एज मेंस दीटा जाक परीक्षा रे करंट अफेयर रो सिग्निफिकेंस बढ़ी बढ़ी चली। प्रिलिम्स रे भी नंबर ऑफ करंट अफेयर अधिक आसुचंती, मेंस रे मध्य करंट अफेयर अधिक अधिक आसु। उतरे कहली बोथ इन प्रिलिम्स एज वेल एज मेंस हमको करंट अफेयर पोर्शन रो क्वेश्चन अधिक नंबर देखिया मिलुची, स्पेशली इन गवर्नेंस, इन एनवायरनमेंट, साइंस टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज, ये सब रे करंट अफेयर रिलेवेंस बढ़ी बढ़ी जाउची। सो व्हाट शुड बी द परफेक्ट सोर्स? को सोर्स हमें पढ़िवा दरकार? द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस, मोस्ट इंपोर्टेंट वन। सेकंड इज इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, कुरुक्षेत्र, फ्रंटलाइन, ज्योग्राफी एंड यू, योजना मैगजीन, डाउन टू अर्थ, साइंस रिपोर्टर, ये सब हम पई इंपोर्टेंट। बट प्रैक्टिकली जदि हम देखिबा एते सब सोर्स को हम फॉलो करिबा, इट इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर ईच एंड एवरी एस्पिरेंट। सो एही कारणरू PW OPSC वाला चैनल रे हिंदू एडिटोरियल क्लास वीकली अवेलेबल, आपको समस्त करि परिबे, व्हिच विल बी ऑफ मच बेनिफिशियल फॉर योर प्रिपरेशन। वीकली आसुची आपको मैं आंसर राइटिंग फॉर्मेट रे आपको डिस्कस करूची प्रत्येक टॉपिक एवं से टॉपिक रे को सब टॉपिक अछि, तार रिलेवेंस कोन, तार सिग्निफिकेंस कोन, ई सब पॉइंट को मु इन डिटेल डिस्कशन करूची। सो एठी हमें जानिबा दरकार जेतेबेले हिंदू पेपर, न्यूज़ पेपर हमें पढुचंती द हिंदू, सितरे को पार्ट को फोकस करबा दरकार एवं को पार्ट को स्किप करबा दरकार। मोस्ट इंपोर्टेंट जिनस जहाँ हमें स्किप करबा दरकार, दैट इज पॉलिटिकल न्यूज़, पॉलिटिकल रिमार्क्स, लोकल पॉलिटिक्स एवं स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़, अवार्ड रिलेटेड न्यूज़, एंटरटेनमेंट, डेथ रिलेटेड न्यूज़, ये सब को हमें अवॉइड करबा, ये सब पढ़िबार किछि आवश्यकता नाही। ताले को पोर्शन को हमें पढ़िबा दरकार, सिग्निफिकेंस और रिलेवेंट पोर्शन किए, सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज, कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेटेड मैटर्स लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट रो जदि किछि इंपोर्टेंट वर्डिक्ट अछि, जेमति कि मु आज रो क्लास रे डिस्कशन करिवि अबाउट अ पिटिशन व्हिच वाज फाइल्ड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अगेंस्ट जो माने कॉर्पोरेट, इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर अछंती बा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगेंस्ट रो केस फाइल हेतला इजराइल को मिलिटरी इक्विपमेंट एक्सपोर्ट न करिया पे, टू स्टॉप एक्सपोर्ट ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशंस और मिलिटरी इक्विपमेंट्स टू इजराइल बिकॉज ऑफ द इजराइल पैलेस्टाइन क्राइसिस। दिस इज अ वेरी प्रोलॉन्ग्ड क्राइसिस एवं देयर इज ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। एटी हमको ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस मध्य देखिया मिलुची रीजन में। सो एही पर्पस रे सुप्रीम कोर्ट रे केस फाइल हेतला एंड इट वाज डिक्लाइंड, इट वाज रिजेक्टेड बाय द ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट। तापर हम आज हम डिस्कशन करिवा। देन सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज, फॉर एग्जांपल एलडब्ल्यूई ऊपर जदि किछि टॉपिक आसछि, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट रे इंसर्जेंसी, जम्मू कश्मीर मिलिटेंसी ऊपर जदि किछि क्वेश्चन आसछि बा साइबर क्राइम, ये सब सिक्योरिटी इश्यूज रे आसुचंती। देन इंटरनेशनल रिलेशन लाइक इंडिया रे नेबरिंग कंट्रीज पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश रे जदि किछि चेंजेस आसुछि बा जेमति बांग्लादेश अनुप्रवेशकारी माने बांग्लादेश रु माइग्रेशन होची इंडिया को अधिक, यार कॉज कोन, यार इराडिकेशन कोन, बा रेमेडीज कोन में अब अडॉप्ट करि परिबा। देन वल्नरेबल सेक्शन, दोज हु आर मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, को माने मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ना एससी एसटी, वुमेन, एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी, थर्ड जेंडर, ये सब ऊपर हम डिस्कशन करिया दरकार बा ये सब को पढ़िया दरकार जेते बेले आपण करंट अफेयर प्रिपेयर होचन। सो एको पढ़िया पई हेले ना प्रथम दिन से हमको बुझवा दरकार कि यू शुड नो योर सिलेबस प्रॉपर्ली। जीएस 1 2 3 4 रे कोन आपनकर सिलेबस अछि, तर टॉपिक कोन, सब टॉपिक कोन, तर माइक्रो सिलेबस कोन अछि, बहुत इंपोर्टेंट, ताकू मन रखिबे सो दैट करंट अफेयर आसिले जानि परिबे कि ये को पेपर रु आसीछि, जीएस रो को पेपर रु आसीछि एवं को टॉपिक रु आसीछि और को सब टॉपिक रु आसी। सो माइक्रो सिलेबस एनालिसिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट, समस्त तक भलो भाबरे मन रखिबे। नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक ऑफ डिस्कशन। फर्स्ट टॉपिक ऊपर आज हम डिस्कशन करिवि अबाउट डेमोक्रेटिक एंगेजमेंट विथ अ डिजिटल प्लगइन। सो ये बेसिकली ये जो टॉपिक देखुचे हमें, ये कहा ऊपर आसुची ना, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म। डिजिटल मीडिया रे टेक्नोलॉजी को केमती यूटिलाइज करा जाउतला ड्यूरिंग योर इलेक्शन टाइम पीरियड। सो सेप्टेम्बर 15 15 सेप्टेम्बर को कहा जाए इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी।
इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी सो गोटे स्टडी गोटे रिसर्च स्टडी हेतिला व्हिच वाज कंडक्टेड बाय लोकनीति सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज and it revealed the growing importance of digital political advertisement. Recently election ହେଇଛି इंडिया रे ଏବଂ election time period ରେ हमको देखिବାକୁ मिलुଥିଲା political advertisement different political parties all the political parties ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର political agenda political propaganda को spread କରୁଥିଲେ to the people to the public by using digital platform like YouTube ହେଇगला आपनकर Facebook ହେଇगला ये सब थ्रू रे ସେମାନେ spread କରିବା ବା transmit କରିବା ପାଇଁ चाहूଥିଲେ so यार importance केबेटु आसिला for use of technology in the field of transmitting political news or political agenda to the public जेतले ब्रेक्जिट रो कथा आसिला ब्रिटेन एग्जिट बा लीव यूरोपियन यूनियन ये जो कैंपेन जेतले आसिला ब्रेक्जिट कैंपेन इट हाइलाइटेड हाउ टेक्नोलॉजी हैज रिशेप्ड डेमोक्रेटिक प्रोसेस ये केमती डिजिटल प्लेटफॉर्म केमती ट्रांसफॉर्म करूची पब्लिक ओपिनियन कलेक्ट करिवारे बा पब्लिक ओपिनियन को रिशेप करिवारे सो बेसिकली कोन हुए पब्लिक ओपिनियन को रिसेप करा जाए बाय यूजिंग डिजिटल मीडिया तो एठी डिजिटल मीडिया हिसाब रे के काम करूची आपनकर व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर यूट्यूब ये सब काम करछन एज डिजिटल मीडिया सो इंडिया रे जदि हम देखिबा नेशनल एवं रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज एमाने कंटीन्यूअसली डिजिटल कैंपेन करि आसले इन द लास्ट इलेक्शन सो 2023 कर्नाटक असेंबली इलेक्शन जदि हम देखिबा एठी केमती डिजिटल इन्फ्लुएंस रो इंपैक्ट कोन पड़ी स्पेसिफिकली डिजिटल इन्फ्लुएंस रो इंपैक्ट कोन पड़ी सबुटु इंपोर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी अपन देखंतु बीजेपी spent 7,800 lakh on digital advertisements so party रो total propaganda budget रो 52% बीजेपी रो total propaganda budget रो 52% ये कोठी खर्च करची ना political advertisement in the field of in digital advertisement so digital technology रे ये खर्च करची in the same way जदि हम कांग्रेस कथा देखिबा ये स्पेंड करते कितना 4,900 लाख ये होची ता टोटल फंडिंग रो 55% बा टोटल इन्वेस्टमेंट रो 55% सो जो अदर वे ऑफ पब्लिसिटी थिला पूर्वर जेमते फ्लैग मार्च बिलबोर्ड्स पब्लिक मीटिंग रैलीज ये सब कमी गलानी सो बीजेपी ता टोटल एक्सपेंडिचर रो मात्र 16% कांग्रेस ता टोटल एक्सपेंडिचर रो मात्र 7% खर्च करची ट्रेडिशनल वे ऑफ ब्रांडिंग रे सो ट्रेडिशनल ब्रांडिंग रे बहुत कम खर्च होइछि वेयर एज हम एटे देखुचे ये इलस्ट्रेशन हमको देखुची एग्जांपल हमको देखुची कि केमती ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम पीरियड पॉलिटिकल पार्टी मानकर टोटल बजेट रो मोर देन 50% से माने खर्च करछन कहउथि ना डिजिटल प्लेटफॉर्म रे बा डिजिटल मीडिया एडवर्टाइजमेंट रे सो इट शोज अ स्ट्रेटेजिक शिफ्ट टुवर्ड्स द डिजिटल प्लेटफॉर्म इन द इलेक्टोरल स्ट्रेटजी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज सो बीजेपी होची फर्स्ट इंडियन पॉलिटिकल पार्टी जे मोर देन 116 करोड़ खर्च करछि ऑन गूगल एड्स इन जस्ट 5 मंथ्स इलेक्शन पूर्व 5 मास रे बीजेपी 116 कोटी टंका खर्च करछि कोटू ऑनवर्ड जनवरी 2024 ऑनवर्ड्स सो इट शोज देयर इन्वेस्टमेंट रेस्ट केते कोन फैक्ट फिगर अछि निजे देखिबे तापर बेसे डिस्कशन करनी ना आसीबा हम एटी प्रॉब्लम कोन हमें देखले बर्तन इश्यू कोन देखिले हमें फैक्ट देखिले बर्तन आसीबा इश्यू कोन प्रॉब्लम ए जगह रे कोन होछि प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू रेगुलेशन ऑफ एक्सपेंडिचर कहार ना पॉलिटिकल पार्टी मानकर एक्सपेंडिचर सो एटी प्रॉब्लम कोन होछि ना देयर इज डिस्पैरिटी इन फाइनेंशियल रिसोर्सेस अमंग पॉलिटिकल पार्टीज स्पेसिफिकली जदि हम देखिबा डिजिटल एडवर्टाइजमेंट स्पेंडिंग रे किछि पॉलिटिकल पार्टी से माने बहुत अधिक रो अधिक बा जेमति हम देखले दीटा एग्जांपल देखले लीडिंग पॉलिटिकल पार्टी मानकर इंडिया रे जोटी मोर देन 50% ऑफ देयर टोटल एक्सपेंडिचर दे कोटी एक्सपेंडिचर्स माने करूचंदी ना ऑन द फील्ड ऑफ डिजिटल एडवर्टाइजमेंट ऑन डिजिटल कैंपेन्स हैला सो देयर इज ये इलेक्शन को ना डिस्प्रोपोर्शनेटली अफेक्ट करिवो काहे कि अफेक्ट करिवो गोटे पॉलिटिकल पार्टी बहुत अधिक इन्वेस्टमेंट कला बा एक्सपेंडिचर बढ़ेला डिजिटल एक्सपेंडिचर आउ गोटे पॉलिटिकल पार्टी कम डिजिटल एक्सपेंडिचर कला कोन कहले गोटे पॉलिटिकल पार्टी अधिक डिजिटल एक्सपेंडिचर कला आउ गोटे पॉलिटिकल पार्टी कम डिजिटल एक्सपेंडिचर कला सो ऑटोमेटिकली पब्लिक ओपिनियन बायसनेस ता सेही अनुसार रिशेप हे जो जे अधिक एक्सपेंडिचर करिछि ताड को समानकर इनक्लेशन ता अधिक रहयो ताले एठी हम कोन करि परियो व्हाट शुड बी द सॉल्यूशन ये इश्यू को जदि हम देखुछि कि देयर इज डिस्प्रोपोर्शनेट एक्सपेंडिचर इन द डिजिटल प्लेटफॉर्म यार सॉल्यूशन कोन होई पारे ना सॉल्यूशन होछि वी कैन पुट अ कैप्स ऑन द कैंपेन एक्सपेंडिचर ऊपर हम गोटे कैपिंग लगै परियो कि मैक्सिमम एति कि टंका डिजिटल एडवर्टाइजमेंट रे गोटे पॉलिटिकल पार्टी खर्च करि परियो बा द टोटल एक्सपेंडिचर एति कि परसेंटेज से खर्च करि परियो देन वी नीड अ क्लियर गाइडलाइंस related to prevent financial dominance from distorting the democratic process
सो फाइनेंशियल डोमिनेंस देखो इन्वेस्टमेंट बा एक्सपेंडिचर डेमोक्रेटिक इट इज अ थ्रेट टू द डेमोक्रेटिक प्रोसेस कहीं जो पॉलिटिकल पार्टी जिते अधिक इन्वेस्टमेंट करिवो से पॉलिटिकल पार्टी पब्लिक ओपिनियन बा पब्लिक गैदरिंग बा पब्लिक सपोर्ट सेते अधिक पाए माने एथरो हम देखुचे फाइनेंशियल स्ट्रेंथनिंग जो पार्टी पाखरे फाइनेंस अधिक अछि सी जितिबार चांस अधिक बा से पब्लिक ओपिनियन को मैनिपुलेट करिवार चांस अधिक so it is a threat to the democracy. Democracy is for the people, by the people, and of the people. Democracy is about public opinion. So public opinion को यदि हमें manipulate करूचे, public opinion को यदि हमें change करूचे, automatically it becomes a threat to the democratic procedures. So ये first issue. Now come to the second one. Second one is related to transparency in the third party campaigning. So it problem कौन? तो third party funding. थर्ड पार्टी फंडिंग जोटा हमें देखुचे इलेक्शन कैंपेनिंग रे बा पॉलिटिकल पार्टी मान सेतरे ट्रांसपेरेंसी रहउनी सो जणा पडुनी व्हाट इज द प्रॉपर सोर्स को जगह रु बा को सोर्स रु एटी पॉलिटिकल पार्टी माननकु को सोर्स रु पॉलिटिकल पार्टी माननकु तांकर कलेक्शन गुडा का आसुची बस मानकर फंडिंग गुडा का आसुची इन द सेम वे जदि हम देखिबा इंडिपेंडेंट बॉडी इज रिक्वायर्ड जो थर्ड पार्टी कैंपेनिंग हमें देखुचे ये थर्ड पार्टी कैंपेनिंग पई ये एक्टिविटी को बंद करिया पई हम गोटे इंडिपेंडेंट बॉडी दरकार जे ऑडिट करिवो जे ऑडिट करिवो हैला जेन मझिरे इशू आस्तला इलेक्टोरल बॉन्ड रो इशू तो कोटना कोटी डिस्कशन करथि सो सेम टाइप ऑफ इशू विल अराइज देन प्लेटफॉर्मानाइजेशन एटी कोन होउची देयर इज अ वेरिएशन इन द कंटेंट स्ट्रेटजीज अक्रॉस डिफरेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर एग्जांपल हमें देखिबा व्हाट्सएप गोटे प्लेटफॉर्म यूट्यूब गोटे प्लेटफॉर्म फेसबुक बा मेटा जहा को सी गोटे प्लेटफॉर्म एटी ना डिफरेंट प्लेटफॉर्म they have their own ideologies or they have their own rules and regulations for example Google ad रे हमको रिलीजन बा कास्ट रिलेटेड कंटेंट को जनरली प्रोहिबिट करा जाय बा अवॉइड करा जाय इन द सेम वे मेटा बा जको फेसबुक कहूचे एथिरे डेरोगेटरी कंटेंट किछि किछि समय हमको डेरोगेटरी कंटेंट देखिया पई मिली थाए सो इट डिपेंड्स को टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म को टाइप रो कंटेंट को यूटिलाइज करूची नाउ सबो प्लेटफॉर्म रे यूनिक कंटेंट बा यूनिफॉर्म कंटेंट पब्लिश हो नै ताले प्रॉब्लम कोन हो ना पॉलिटिकल पार्टी मान को कौन दरकार ना मैनिपुलेशन इन द इन्फॉर्मेशन माने इन्फॉर्मेशन को मैनिपुलेट करिवे काहे कि ना वोटर रो थिंकिंग प्रोसेस को रीशेप करिया पई वोटर रो थिंकिंग प्रोसेस को चेंज करिया पई मतलब इंक्लिनेशन को बढ़िया पई सो से माने सेही प्लेटफॉर्म को यूज करिवे जहा को अधिक मिसयूज करा जाय परिबो बा जहा को इजीली अब्यूज करा जाय परिबो सो एठी हम कोन दरकार ना यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म एठी हम कहा पर डिस्कशन करछे हियर वी टॉक अबाउट द यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म So ये ला चारिटा इंपोर्टेंट पॉइंट एठी मु डिस्कशन कली आपको मन रखबे दिस इज रिलेटेड टू डेमोक्रेटिक एंगेजमेंट विथ द डिजिटल प्रॉब्लम नाउ कम टू द सेकंड कांसेप्ट सेकंड टॉपिक ऑन ह्यूमैनिटेरियन टच टू इंडियास मिनरल इकोसिस्टम जो रीजन ने माइनिंग अछि बा माइनिंग रीजन जदि हम देखिबा एठी अनेक प्रकार राइट्स वायोलेशन हेता है लाइक स्पेसिफिकली राइट्स लाइक आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल डिग्निटी हैला सो राइट टू पर्सनल लिबर्टी So right to life or personal liberty कौन होची एठी right to life means right to a dignified life right to life means right to a dignified life right to life includes right to access a clean environment now जो region ने mining हेता है सेठी clean environment is just like a dream से region ने हमको mining area रे हमको clean environment मिल पारि नथा है so for that we have an act known as the Mines and Minerals Act 2015 so ये कौन करछ ना it mandates auctions and it establishes the district mineral foundation so जो DMF देखो चाहे हमें डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन इट एंश्योर्स लोकल कम्युनिटीज बेनिफिट फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्स लेड डेवलपमेंट माइनिंग गोटे नेचुरल रिसोर्स एतिर जो कंपनी याको एक्सट्रैक्ट कला पर जति प्रॉफिट मिलुची से प्रॉफिट रो गोटे शेयर बा गोटे परसेंटेज लोकल कम्युनिटी रो डेवलपमेंट हवा दरकार ता ऊपर DMF डिस्कस करची सो DMF कहूची जो मानक पाखरे माइनिंग लाइसेंस अछि बा जो माने माइनिंग लीज होल्डर से माने तांको प्रॉफिट रो बा रॉयल्टी पेमेंट रो गोटे पोर्शन ता कहबे ना DMF ले So there is a national DMF portal. So national DMF portal रो काम कोन ना ये DMF रो ट्रांसपेरेंसी एवं एफिशिएंसी को इंक्रीज करिवो सो DMF रो स्पेसिफिकली जदि हम देखिबा ए जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन देखुचे यार स्कोप कोन यार सिग्निफिकेंस कोन नै को जो कम्युनिटी वेलफेयर माने कम्युनिटी माइनिंग एरिया रे जो कम्युनिटी रहउचे से कम्युनिटी रो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कोन कहली माइनिंग एरिया रे जो कम्युनिटी अछि से कम्युनिटी रो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैला सो माइनिंग पाई कम्युनिटी ऊपर जहां एडवर्स इंपैक्ट पडुची से इंपैक्ट जेमते न पडु से इंपैक्ट जेमते रिड्यूस हे जाउ देन इंक्लूसिव डेवलपमेंट कोन कहूची इट शुड इंक्लूड ईच एंड एवरी कम्युनिटी सो लोकल कम्युनिटी जो माने से रीजन रे रहउचंदी
सेमानकर सोशल इंक्लूसिविटी बढ़िया दरकार इट मींस सेमानकर सोशल डेवलपमेंट हवा दरकार और दिस शुड बी अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मॉडल ऑफ द गवर्नमेंट देन ये कुछ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हवा दरकार कोऑपरेटिव फेडरलिज्म माने नेशनल लेवल स्टेट लेवल लोकल गवर्नेंस नेशनल लेवल स्टेट लेवल एवं लोकल गवर्नेंस इंक्रीज हवा दरकार बा माइनिंग रो जो इंपैक्ट पड़ुची कोन कहली माइनिंग ऊपर जो इंपैक्ट पड़ुची से इंपैक्ट रिड्यूस हवा दरकार देन ये कहूची सस्टेनेबिलिटी ये एटी कहां पर एम करछि ना इट एम्स टू अलाइन विथ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो 17टा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऊपर हम डिस्कशन करछे बा 169 टारगेट ऊपर हम डिस्कशन करछे ये कहूची से 17 एसडीजी को एवं ता मध्ये 169 टारगेट को केमति अचीव करा जाय पारि then it talks about innovation and planning so there are different DMFs innovate to maximize project impact it adopts 3-year plans for goal oriented development gote region na specific development it means economic growth and economic development he paribo ye ta pai short term planning 3-year planning ba long term planning upare discussion karuchi so ye gala important point scope of DMF स्कोप ऑफ डीएमएफ बा मिनरल इकोसिस्टम या ऊपर पढ़िबे नेक्स्ट टॉपिक को जिबा हम थर्ड टॉपिक ऑन इंडियास ऑनगोइंग एक्सपोर्ट्स टू इजराइल रिसेंटली समस्त जानि चंती गाजा स्ट्रिप रे बिकॉज ऑफ इजराइल एंड पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट एठी हमको कंटीन्यूअस और प्रोलॉन्ग्ड ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस देखियो पई मिलुछ सो देयर इज हाई इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी malnutrition हंगर चाइल्ड अब्यूज बा जदि डेथ रेट देखिबा हाई डेथ रेट एमएमआर आईएमआर हाई डेथ रेट then the right to life it's completely violated right to education is not given to their children so there are so many issues associated humanitarian crisis is there in this region so ei samay re problem kono na india export karuchi israel ko arms and ammunition so military equipments ye kaha ko export karuchi india na israel ko export karuchi india ra public evam private sector company they are supplying defense related materials to israel they are supplying defense related material to israel so जो conflict continue होची गाजा रे the government of India continued to issue license for the export of arms and military equipments to Israel so there are different international obligations I will discuss about different international obligation जो माने specifically discussion करूचंती to maintain international peace and prosperity कोन करथने माने to maintain international peace and prosperity but ये सब obligation थिबा सत्वे India is a party to signatory to those conventions still India is supplying arms and ammunition and violating those international conventions so a light रे जदि हम देखिबा सुप्रीम कोर्ट रे गोटे केस फाइल हेतला सुप्रीम कोर्ट रे one case was filed and supreme court the honorable apex court was pleased to reject this petition ए petition को reject कर देला for different reason मुआसी को कारण मानक पई सुप्रीम कोर्ट को reject कले ता पूर्वरु हम देखिबा जदि इंडिया इजराइल को आर्म्स एंड एम्युनिशन एक्सपोर्ट करूची ताहले को वे रे इंडियन लॉ गुडा को वायलेट करूची सो प्रथमे कहूची कॉम्प्लिसिटी इन द जेनोसाइड सो व्हेन इंडिया एक्सपोर्ट्स आर्म्स एंड एम्युनिशन टू इजराइल इंडिया's risk being complicit in violation of the international humanitarian law now international humanitarian law basically protects human rights when there is an armed conflict जो जगह armed conflict हुई से रीजन ने ह्यूमन राइट्स लॉ को प्रोटेक्ट करके ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करके इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ सो जेते बेले तार अर्थ होची इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ को वी आर नॉट ऑब्लिगेटरी टू ऑल दोस लॉज बाय कन्वेंशन गुडा को हम ठीक भाबे मानुने तामाने हम इंस्टिगेट करूचे कि आर्म्स एंड एम्युनिशन सप्लाई करबा द्वारा दिस इज इंप्लाइड कि इंडिया इंस्टिगेट करूची ये रीजन ने पीस एंड प्रॉस्पेरिटी न हो सो इंडिया इज आल्सो सिग्नेटरी टू द जेनोसाइड कन्वेंशन आई विल टॉक अबाउट जेनोसाइड कन्वेंशन genocide convention ne India is obligatory to this so article 1 अनुसार genocide convention रो प्रत्येक signatory state मानकर objective कोन ना to prevent genocide and avoid providing aid or assistance to any state engaged in genocide जो state genocide रे involve होचे जो गुडा को नरहत्या रे जो state माने involve होचंती ताकू अलगा state माने support करिवे नाही बोली article 1 कहूछ प्लस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ये तो गला इंटरनेशनल लॉ कथा बर्तमान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आसवा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 21 इज राइट टू लाइफ एज वेल एज पर्सनल लिबर्टी जोटा हम डिस्कशन करथिले पर्सनल लिबर्टी एज वेल एज राइट टू लाइफ नाउ आर्टिकल 21 माय पॉइंट इज वेदर आर्टिकल 21 इज अवेलेबल ओनली टू इंडियन सिटीजन्स और टू फॉरेनर्स द आंसर इज इट इज अवेलेबल टू बोथ इंडियन सिटीजन्स एज वेल एज टू द फॉरेनर्स when it is available to the foreigners it means it is available to the person living in Gaza Strip
इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट रो शिकार जो माने होचंदी सेमानक ऊपर मध्ये आर्टिकल 21 इज ऑपरेटिव तमरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये पार्ट मध्ये हम वायोलेट कले व्हेन वी सप्लाई आर्म्स एंड एम्युनिशन टू दोस रीजन्स देन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रो अनेक गोटे प्रेसिडेंट बा पूर्व दिया जेथा जजमेंट अछि जे डिफरेंट स्टेट्स बा डिफरेंट कंट्री मानको को वार्निंग दोचंती टू स्टॉप एक्सपोर्टिंग आर्म्स टू द कॉन्फ्लिक्टिंग जोन्स को आर्म्स एंड एम्युनिशंस को एक्सपोर्ट न करिया पई माने वार्निंग दोचन हला नाउ इंटरनेशनल प्रेशर कोन अछि एवं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रो ओपिनियन ए लाइट रे कोन अछि आईसीजे रो गोटे प्रोविजनल मेजर अछि 2023 रे जनवरी 2023 रे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस गोटे ऑर्डर देले related to related to humanitarian crisis in the Gaza Strip एवं specifically against Israel for violation of genocide convention Gaza Strip रे genocide convention को इजराइल मानुनी बोली आईसीजे ए लाइट रे गोटे ऑर्डर पब्लिश कर या व्यतीत जदि हम देखिबा देयर इज ग्लोबल रिस्पांस बहुत गुडे कंट्री अछन लाइक कनाडा स्पेन यूके एमाने आर्म्स एंड एम्युनिशन जहां एक्सपोर्ट करथले इजराइल को से सब एक्सपोर्ट को बंद कर देते वेयर इंडिया सप्लाई कंटिन्यू करछ नाउ India's non-compliance is there so many international legal obligations are there plus global response is there other countries they stopped providing arms and ammunition to these countries to specifically to Israel এবং India ए जगह रे याको न मानिवार अर्थ our non compliance to international humanitarian law India's non compliance to international humanitarian law so these are the issues now come to the Geneva convention charita Geneva convention also specifically the fourth Geneva convention is important for us first Geneva convention it is related to protection of wounded and sick soldiers on the land during war समय रे जो माने सब आहत सैनिक माने अछंदी ये समान को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करछि कि ना फर्स्ट जेनेवा कन्वेंशन एटी क्वेश्चन आसीबो को जेनेवा कन्वेंशन ता रो ऑब्जेक्टिव कोन नो सेकंड जेनेवा कन्वेंशन इट इज रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ वुंडेड sick and military personnel at the sea during the war ये sea रो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करछि थर्ड कन्वेंशन इट इज अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स ऑफ war रो prisoner मान को केमदे ट्रीटमेंट करा जीवन फोर्थ जेनेवा कन्वेंशन इट इज अबाउट सिविलियन पर्सन्स सो इट प्रोटेक्ट्स civilian persons life during the war time period now येला चारिटा जेनेवा कन्वेंशन ऊपर कहि एंड स्पेसिफिकली एठी को जेनेवा कन्वेंशन पे वायोलेट करछ ना इंडिया इज वायोलेटिंग द फोर्थ जेनेवा कन्वेंशन हमें वायोलेट करछ फोर्थ जेनेवा कन्वेंशन सो इंडिया रो ऑब्लिगेशन एठी कोन इंडिया हैज रैटिफाइड जेनेवा कन्वेंशन इन 9th November 1950 सो ऑब्लिगेशन कोन ना हमर ऑब्लिगेशन होची टू इंप्लीमेंट इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ जो रीजन में आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट है से रीजन नहीं लागि था तो ताकू प्रोटेक्ट करबा होचा हमर बेसिक ऑब्जेक्टिव एटी हम ताकू प्रोटेक्शन देले नाउ लेजिस्लेशन जदि हम देखिबा जो वार क्राइम रिलेटेड लॉ को इंप्लीमेंट करिया पे लेजिस्लेशन इंडिया रे सेमति किछ नाही सो इंडिया वायलेट जेतल करछि इंडिया रे इंटरनल लॉ मध्ये हम से डेपर रहता नाउ कम टू द डिसेमिनेशन ने ये कहछि जो स्प्रेड ऑफ India is required to spread knowledge of the conventions among its armed forces and civilian population. India armed force एवं civilian population एमानक सहित ये कहछि जेनेवा कन्वेंशन नॉलेज को स्प्रेड करिया पय बा जेनेवा कन्वेंशन ऑब्जेक्टिव को स्प्रेड करिया पय देन नॉन एड टू ब्रीचेस so India must not aid or India must not assist in violation of the conventions committed by other states when other states they are protecting the human rights in the Gaza Strip India madhya in the same way India is known to be the state which shows the light of ahimsa मतलब non violence कहछि India सॉफ्ट पावर हिसाब रे वर्तमान विश्व गुरु हिसाब रे इंडिया अहिंसा से कहछि टोटल वर्ल्ड को इंडिया इज द कंट्री ऑफ महात्मा गांधी इंडिया इज द कंट्री ऑफ बुद्ध इंडिया इज द कंट्री ऑफ स्वामी विवेकानंद जो कंट्री समग्र पृथ्वी को समग्र विश्व को अहिंसार मार्ग देखैति से कंट्री कोनोसी ना कोनोसी जगह रे एवलिया कार्यकलाप हमको देखिया मिलुची ये इंस्टिगेट करूची फॉर वायलेंस एज वेल एज वायोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड breach of peace and tranquility हला तले इश्यू कोन एटी प्रॉब्लम कोन इन्वॉल्व होई अछि एटी प्रॉब्लम इन्वॉल्व होई अछि कि it is a foreign policy matter whether India should supply or export arms and ammunition to Israel this is a matter of foreign policy now case file la court na supreme court re for judicial review now judicial review of executive action co-related judicial review of executive action related to foreign policy matter how far it is justiciable Indian judiciary interfere करिवा दरकार ना दरकार नहीं फर्स्ट इश्यू सेकंड इश्यू इंटरप्रिटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ इन द डोमेस्टिक कोर्ट माने इंडिया रो कोर्ट रे
इंटरनेशनल लॉ को एप्लीकेशन करा जिवो को हिसाब रे एवं तार इम्प्लीमेंटेशन को हिसाब रे हो बा तार मीनिंग टा को इंटरप्रिट केमति करा जिवो सेटा केते दूर यथार्थ ये होची सेकंड इश्यू सुप्रीम कोर्ट याको गोटे एंगल नु रिजेक्ट करिवार गोटे पॉइंट मध्ये रखले कि द स्टेट ऑफ इजराइल इज नॉट अ पार्टी टू दिस केस इजराइल गोटे पार्टी नथिला एथरे केवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज अ पार्टी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज मेड अ पार्टी सो से कहले कि जदी इजराइल इज नॉट अ पार्टी टू दिस केस तले केस केमति हे परिबो बट सुप्रीम कोर्ट नाउ द क्वेश्चन इज जब आउ गोटे कंट्री को आमे गोटे पार्टी करिके आनिबा एवं इंडियन कोर्ट रे तार विचार करबा इंडियन कोर्ट रे तार जुरिसडिक्शन करबा हाउ फार इट इज जस्टिसेबल या पई द इंटरनेशनल कोर्ट जुवा दरकार इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को जुवा दरकार सो इंडियन कोर्ट रे गोटे फॉरेन स्टेट रो बा गोटे फॉरेन कंट्री को फॉरेन कंट्री रो जुडिशियरी ऊपर जुरिसडिक्शन आनिबाटा हाउ फार इट इज जस्टिसेबल नाउ इन कंसिस्टेंसी विथ एक्शंस ऑफ अदर नेशंस अलगा स्टेट बा अलगा कंट्री स्टेट रो अर्थ होची कंट्री इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट रे सो अलगा कंट्री जो आर्म्स एंड एम्युनिशन दवा बंद कर सारे इंडिया ए लाइट रे आर्म्स एंड एम्युनिशन प्रोवाइड करबे हाउ फार जस्टिसेबल देन जुडिशियरी रोल कोन इन अपहोल्डिंग इंटरनेशनल कमिटमेंट्स इंटरनेशनल कमिटमेंट को अपहोल्ड करिवारे जुडिशियरी रोल कोन होवा दरकार एवं लीगल ऑब्लिगेशन इंडिया रे कोन रहबा दरकार टू प्रिवेंट जेनोसाइड दीज आर द लीगल इश्यूज बा यदि हम देखिबा क्रिटिकल इश्यूज एसोसिएटेड विथ द एक्सपोर्ट ऑफ आर्म्स एंड एम्युनिशन टू इजराइल Now come to the fourth topic. Fourth topic is on reasonable accommodations. Sorry, this is not on reasonable accommodation. This is on Earth's Overshoot Day. This is on Earth's Overshoot Day. So 30 December 1970. याको कुआ जाए Earth Overshoot Day. यार अर्थ कौन? Overshoot Day अर्थ होची जेतेबेले humanitarian demand for resources exceeds the Earth's ability to regenerate them within a year. अर्थ रे हमें जहा रिसोर्स यूज करूचे वेदर दैट इज रिन्यूएबल और नॉट रिन्यूएबल इको जति रिन्यू होची हमें जति के रिक्वायरमेंट सेटा जति रिन्यू होई जाउची इन 1 ईयर विद इन 1 ईयर ताल ठीक अछि बट ए डेट रे हमको देखिया को मिलला 30 डिसेंबर 1970 रे हमको देखिया को मिलला कि हमर डिमांड जहा विद इन 1 ईयर अर्थ को रीजनरेट करि परिबो नाही हला सो गोटे इंटरनेशनल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन थिला जार नाउ द ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क ये कैलकुलेट कला अर्थ ओवरशूट डे by dividing the earth's biocapacity by humanity's ecological footprint कोन अपन एनवायरनमेंट क्लास रे पढिबे हला एनवायरनमेंट क्लास रे डिटेल डिस्कशन हो सो एठी देखिबा हमें गोटे प्रिंसिपल ऊपर एठी मो डिस्कशन करछि दिस इज नोन एज अ मास्ट्रिस्ट प्रिंसिपल ये कहउछि फ्यूचर जनरेशन को केमते हम क्लाइमेट जस्टिस दे परिबा now in the constitution of india we have discussed about the social justice economic justice and political justice now I will be talking about the fourth form of justice that is known as climate justice climate justice रो अर्थ होची इकोनॉमिक डेवलपमेंट पई बा इकोनॉमिक ग्रोथ पई कोन नेगेटिव इंपैक्ट पड़ुची ऑन द क्लाइमेट बा केमते क्लाइमेट चेंज होची बा क्लाइमेट रिलेटेड इश्यू केमते क्रिएट होची तब हम कहते क्लाइमेट जस्टिस सो क्लाइमेट चेंज सब जगह यूनिफॉर्म हुए को जगह ड्रॉट होची तो को जगह फ्लड होची को जगह आउ किछ अदर टाइप ऑफ क्लाइमेटिक इश्यूज देखिबा को मिलुची सो एटी जदि हम देखिया बिकॉज़ ऑफ क्लाइमेट जस्टिस देयर इज आल्सो क्लाइमेट इंड्यूस्ड माइग्रेशन लाइक बांग्लादेश रे poverty unemployment देखिया को मिलुची बिकॉज़ ऑफ लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर so people are migrating to india so this is a climate induced migration now this particular principle talks about the rights of future generation related to climate justice so ये first होची intergenerational equity रो अर्थ होची when we talk about justice of current generation we should think about justice of the future generation हमें वर्तमान जनरेशन नो जस्टिस ऊपर जो डिस्कशन करूचे फ्यूचर जनरेशन नो जस्टिस ऊपर मतलब डिस्कशन करिया को जस्टिस ना क्लाइमेट जस्टिस सेकंड कहूचे राइट टू अ हेल्दी एनवायरनमेंट आर्टिकल 21 नो इम्प्लाइड राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट कहार ना करंट जनरेशन भी फ्यूचर जनरेशन देन थर्ड पॉइंट कहूचे स्टेट ऑब्लिगेशन बा स्टेट रो ऑब्लिगेशन एठी कोन बा कंट्री रो गवर्नमेंट रो ऑब्लिगेशन एठी कोन गवर्नमेंट क्लाइमेट चेंज को केमती प्रोटेक्ट करियो then guidelines for legal framework को टाइप रो लॉ आनिले हमें क्लाइमेट चेंज को रोकी परिबा बा क्लाइमेट चेंज ऊपर गोटे स्ट्रांग रेस्ट्रिक्शन हमें इंपोज करि परिबा ता ऊपर डिस्कशन करूची सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द 9 प्लैनेटरी बाउंड्रीज 9 प्लैनेटरी बाउंड्री अर्थ होची को पॉइंट ऊपर फोकस करिया दरकार बा को जगह हमें लिमिट क्रॉस करि सले बा अर्थ रो स्टेबिलिटी को हमें ऑलरेडी वायलेट करि सले सो नॉट अ इंपोर्टेंट बाउंड्री ऊपर वर्तमान में डिस्कशन करिया द फर्स्ट इज द क्लाइमेट चेंज फर्स्ट वन कहली द फर्स्ट वन इज क्लाइमेट चेंज है ना सो क्लाइमेट चेंज में एटी कोन देखुचे क्लाइमेट चेंज ऑलरेडी ही सर्च
क्लाइमेट चेंज ऑलरेडी हे सलानी क्लाइमेट टा होची लॉन्ग टर्म फेनोमेना हमको देखिया मिलुची जहार इंपैक्ट कहां पर पडुची ना ग्लोबल वार्मिंग होची हम देखले ग्लोबल वार्मिंग बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज सो ग्लेशियर गुडा को मेल्ट करूचंती समुद्र गुडा सी लेवल राइज करूची देन फ्लड क्रिएट होची को जगह रे ड्रॉट क्रिएट होची मॉनसून ऊपर इंपैक्ट पडुची लानिना इफेक्ट एलिनो इफेक्ट सो ये ड्रॉट एवं फ्लड प्रोन रीजन क्रिएट करूची किछि कोस्टल जोन कंप्लीटली सबमर्ज हिजवार मध्ये आशंका अछि सो फर्स्ट ला क्लाइमेट चेंज second is atmospheric aerosol loading it refers to amount of air pollutants so जोगुडा को particulate matter केते increase होचंती एवं air pollutant केते increase होचंती then stratospheric ozone depletion ozone layer टा stratosphere रे अछि ये कोन करूची ना जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो अल्ट्रावायलेट रे अछि ये अल्ट्रावायलेट रे टा को फिल्टर आउट कर दउची अदरवाइज जो अल्ट्रावायलेट रे अर्थ एटमॉस्फेयर को आसे बा सरफेस को आसे देन इट विल कॉज स्किन कैंसर एवं आईज इरिटेशन ये क्रिएट करियो then it leads to ocean acidification then is ocean acidification आगोटे ground then ocean acidification केमती होची environment रे यहाँ पर पूरा गोटे गोटे टॉपिक अछि सेठी पूरा डिस्कशन करिवे यार कॉजेस कोन एंड अदर फैक्टर्स रिलेटेड फ्रेश वाटर चेंज फ्रेश वाटर डिप्लेशन ड्रिंकिंग वाटर मिलुनी लेट्स टॉक अबाउट द सिटीज लाइक दिल्ली बैंगलोर चेन्नई जोटी हमको ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबिलिटी नाही लैंड यूज रे चेंज होची लैंड यूज चेंज माने पूर्वरु जमी जो गुडा जंगल थिला तब काटिक हमें चाष जमी करथले बर्तमान चाष जमी काटिक हमें बास उपयोगी जमी करू सेटलमेंट तयारी करथले सो लैंड यूज रे मध्ये चेंज देखिया कोन सो ऑटोमेटिकली लैंड यूज पैटर्न चेंज हो जाउची यार इंपैक्ट पड़छ बायोडायवर्सिटी पर देन बायोडायवर्सिटी इन बायोस्फीयर इंटीग्रिटी कोन देखुची राइट असेसेस द परसेंटेज ऑफ फंक्शनल डायवर्सिटी एंड द स्पीड ऑफ स्पीशीज एक्सटेंशन so different type of species गुडा का हमको एक्सटेंड हे जागो देखियो पड़छ so endangered vulnerable हे जाउछ different type of species then biogeochemical flow so ये कहूची नाइट्रोजन एवं फास्फोरस केमती गोटे सिंथेसाइज्ड फर्टिलाइजर रु केमती नाइट्रोजन एवं फास्फोरस फ्लो होचे इंपैक्ट पड़छ एंटायर बायोजियोकेमिकल साइकिल ऊपर then novel entities यार अर्थ होची द पोल्यूशन कॉज्ड बाय सिंथेटिक कंपाउंड्स लाइक प्लास्टिक सिंथेटिक कंपाउंड मानक द्वारा केमती इंपैक्ट पड़छ बा ताको यूज करया द्वारा तार इंपैक्ट एंटायर अर्थ ऊपर कोन पड़छ फ्लोरा फौना ऊपर कोन पड़छ स्पेसिफिकली ह्यूमन बीइंग मानक ऊपर कोन सो एटी हम 9टा पॉइंट ऊपर डिस्कशन कले जाको 9 प्लैनेटरी बाउंड्रीज बोली कोआ जाय एवं ए 9 रो 9टा पॉइंट को हम ऑलरेडी ई लिमिट को क्रॉस कर साले सो जहा पई हमको अर्थ सरफेस ऊपर बा बायोडायवर्सिटी चेंजेस देखिए पड़छ फ्लोरा फौना ऊपर इंपैक्ट पड़छ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज गुडा का एक्सटिंक्ट हे जाउचंती एवं फ्यूचर जनरेशन ऊपर जदी हम देखिबा इंपैक्ट आर बढ़ी बढ़ी चली जाको हम क्लाइमेट जस्टिस बोली कहूजे सो पर्टिकुलर ए टॉपिक रे हम डिस्कशन कले बा दिस मास्टर्स प्रिंसिपल दिस इज अबाउट क्लाइमेट प्रोवाइडिंग क्लाइमेट जस्टिस टू द फ्यूचर जनरेशन यार नाम मन रखिबे एटा मध्ये प्रीलिम्स रे क्वेश्चन आसी पारे मेंस रे आपको डिफरेंट एंगल ले डिस्कशन करियो तो ये गला गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक So ठीक अछि चलन नेक्स्ट टॉपिक कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक करंटली वेरी मच इन न्यूज़ दैट इज ऑन डेथ पेनल्टी सो डेथ पेनल्टी ऊपर हम वर्तमान डिस्कशन करियो लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट हिस्ट्री ऑफ डेथ पेनल्टी इंडिया रे डेथ पेनल्टी रा हिस्ट्री कोन इंडिया रे डेथ पेनल्टी रा हिस्ट्री कोन सो एंशिएंट टाइम पीरियड रे जदी हम देखिबा मनुस्मृति रे डेथ पेनल्टी ऊपर मेंशन हेतला इन सम हेनस क्राइम यदि कोन से जघन्य अपराध करछन्ती ताहाले सेठी डेथ पेनल्टी प्रोवाइड करा जाउतला देन मेडाइवल टाइम पीरियड जदी देखिबा हम अनेक गुडे किंग से माने बिहेडिंग हैंगिंग इंपैलमेंट ए टाइप ऑफ पनिशमेंट को प्रोवाइड करथले लोक मानक मन रे फियर क्रिएट करिया पे सो फियर कोन पे क्रिएट करा जाउतला सो दैट पीपल विल बी आइसोलेट देमसेल्फ फ्रॉम कमिटिंग एनी टाइप ऑफ क्राइम सो दैट कोन से लोक कोन से क्राइम करिवोनी ये फियर क्रिएट करिवो कि जदी से माने कोन से प्रकार जघन्य अपराध करचंदी ता बदल से मानक को हेवी टू हेवी पनिशमेंट प्रोवाइड करा जे then 1860 रे आसिला आईपीसी बा इंडियन पेनल कोड जो इट वाज ड्राफ्टेड बाय लॉर्ड मैकाउले सो एथि रे डेथ पेनल्टी रहिला फॉर सर्टेन ऑफेंसेस लाइक मर्डर एंड वेजिंग वार अगेंस्ट द स्टेट यदि स्टेट अगेंस्ट रे वार रेज करिया पई चाहउचंती बा कोनसे जघन्य हत्याकांड करचंती ताल सेठी डेथ पेनल्टी प्रोवाइड करा जिवो देन 1950 रे हमको आसिला कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हम 1950 रे को अडॉप्ट कले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आल्सो डिडंट अबॉलिश दिस डेथ पेनल्टी Rather, Constitution of India has certain safeguards against its arbitrary application. Death penalty ra unnecessary use न हो, but arbitrary application न हो,
सेति मेंशन हला कोथुना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रे 1980 रे गोटे इंपोर्टेंट जजमेंट आसिला नोन एज बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एथिरे सुप्रीम कोर्ट कहले कि रेयरेस्ट डॉक्ट्रिन फॉर्मुलेट कले रेयरेस्ट ऑफ रेयर अर्थ कोन ना रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस रे ही डेथ पेनल्टी दिया जबो जनरली सब प्रकार रो क्राइम रे बा जदि हम देखिबा कि किछि बड़ धरणर क्राइम सब कोन हे पारे which is against the society जेतबे हम क्राइम करूची गोटे accused जेतबे क्राइम करूची the crime is not against a particular person rather this is against the state this is against the society so that's why the state or the government provides an advocate to the victim here victim को मटे गोटे सिंपल जिंस बुझौची देखंतु कोन वे लेट्स से a is the accused a कोन कला ना a killed b b एटी किए ना b होची एटी विक्टिम so ये जो b को किल कला दिस इज नॉट ओनली अ मर्डर ऑफ b rather this is a crime against state ये स्टेट अगेंस्ट रे मध्य गोटे क्राइम बुझिला कहा अगेंस्ट रे कहली दिस इज अ क्राइम अगेंस्ट द स्टेट so that is why b पई गोटे एडवोकेट गवर्नमेंट प्लीडर प्रोवाइड करा छी बा जाको गवर्नमेंट एडवोकेट कहआ जाय कोन कहआ जाय को गवर्नमेंट एडवोकेट कहआ जाय जे बी पई आसबे ए पई जे आसबे तांको आज डिफेंस काउंसिल नोन एज डिफेंस काउंसिल बा डिफेंस एडवोकेट ये प्राइवेटली ए को हायर करिया को पड़िबो एवं ए को आपन पेमेंट करिया को पड़िबो वेयर एज बी को इट गवर्नमेंट एडवोकेट पई कोन प्रकार पेमेंट करिया को पड़िबो नै बिकॉज़ द एडवोकेट is appointed by the government हैला सो एठी डॉक्ट्रिन रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन ने सुप्रीम कोर्ट कहले कि केवल रेयर केस मान करे कैपिटल पनिशमेंट प्रोवाइड करे जो बा डेथ सेंटेंस प्रोवाइड करे नॉर्मल मर्डर हिच चल ए जगह रे डेथ सेंटेंस प्रोवाइड करा जीवो नाही जदी एमती किछ गोटे रॉन्ग मेसेज दोउची सोसाइटी बा जदी सेम लोग कंटीन्यूअसली मर्डर करती इफ इट इज रेयरेस्ट ऑफ रेयर सो रेयरेस्ट ऑफ रेयर एग्जैक्टली कोन याको डिफाइन करिवो कि ना कोर्ट ऑफ लॉ हु केस रा रेयरेस्ट ऑफ रेयर सो इन रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस ट्रायल कोर्ट बा जहा हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोली कहूचे ट्रायल कोर्ट बा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कोन जोटा हम देखते सेशंस एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सो सेशन कोर्ट केते बेले सेशन कोर्ट तोळे क्रिमिनल साइड डील करूचंती एवं केते बेले सिविल साइड डील करूचंती याको हम कहूचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट समस्त जानि सो यांको पकरे पावर अछि टू कौन पाई ना टू पनिश विथ डेथ पेनल्टी टू अवार्ड डेथ पेनल्टी यांको पाकर पावर अछि टू अवार्ड डेथ पेनल्टी हैला सो डेथ पेनल्टी जदी अवार्ड करिवे बट इट शुड बी कंफर्म्ड बाय द रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट इंपोर्टेंट पॉइंट मन रखिवे ये डेथ पेनल्टी देई तो परिवे बट इट शुड बी कंफर्म्ड बाय रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट आप कंफर्म करिवा दरकार अदरवाइज हबन कोन कहली रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट आपको कंफर्म करिवा दरकार अदरवाइज हबन सोटी हम देखिले सेशन कोर्ट बा क्रिमिनल कोर्ट जोटा हम कहउते डिस्ट्रिक्ट लेवल ले ताका पाखर अथॉरिटी अछि डेथ पेनल्टी देबा पई एवं डेथ पेनल्टी देला परे अवार्ड कला परे दैट विल बी कंफर्म्ड बाय द हाई कोर्ट हैला सो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस के नै इट विल बी डिसाइडेड हियर इन द कोर्ट ऑफ लॉ सो देखिबा जुडिशियल प्रोसीजर एक्जेक्टली कोन अछि इंडिया रे डेथ पेनल्टी पई सेशन कोर्ट फर्स्ट हियरिंग करिवे इनिशियल ट्रायल पई as per section 354 clause 3 of the CRPC पूर्व जोटा में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इट हैज ऑलरेडी बीन रिपील्ड सो ए जगह रे कन्विक्ट पाखरे राइट अछि अपील करिया पई कन्विक्ट पाखरे कोन राइट अछि ना अपील करिया पई कोडी अपील करि परिबो ना हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट पर्यंत जी जाय परिबो सो 2023 रे मु डेथ सेंटेंस रिलेटेड किछि इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन दोछि आपन को 2023 रे ट्रायल कोर्ट इशूड 120 डेथ सेंटेंस इन इंडिया सो इंडिया रे 2023 मसिया रे टोटल 120 टा डेथ सेंटेंस अवार्ड करा गला सबुठु अधिक डेथ सेंटेंस कोड थिला ना उत्तर प्रदेश रे सबुठु अधिक कोड थिला उत्तर प्रदेश रे देन अदर स्टेट्स आर झारखंड गुजरात हरियाणा मध्य प्रदेश वेस्ट बंगाल ओडिसा रे मध्ये रिसेंटली गोटे डेथ सेंटेंस हेतिला जदि हम देखिबे गोटे टू द सन जैसे तार पुओ मारी देथिला बोते बापा मां को ना कोन ए टाइप रो गोटे केस थिला एक्जेक्टली मन मन पड़नी अनुगुल ढेंकानाल की नियर बाय डिस्ट्रिक्ट रे सो एटा होची बोते रिसेंट डेथ सेंटेंस ओडिसा सो को टाइप ऑफ केस रे डेथ सेंटेंस अधिक रो अधिक मिलुची ना टाइप ऑफ केस होची मर्डर केस इन्वॉल्विंग सेक्सुअल ऑफेंसेस अकाउंटेड फॉर 53.33% ऑफ डेथ सेंटेंस
टोटाल जति डेथ सेंटेंस होईची 120 टा डेथ सेंटेंस रो 53% केते परसेंट कहली 53% ता माने अप्रोक्सीमेटली एटा होची केते 63-64 डेथ सेंटेंस जदि हम देखिबा 63-64 डेथ सेंटेंस कोन पाइन दिस बिकॉज ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस मर्डर प्लस सेक्सुअल ऑफेंस ता नाउ दीटा जतबे हिनेस क्राइम मिस जाउची जघन्य अपराध मिस जाउची ताको हम कहू रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस हैला. So the completion rate of death penalty confirmation processing in high courts fell by 15%. So the completion means confirmation. किए confirm करिबा एटी कहली death sentence टाको session court दे देबे and that to be confirmed by the high court. High court तक confirm करिवे. So ये कहूचे previous year तमाने 2022 अपेक्षा ये confirmation rate टा कमी जाईची 15%. हैला it has been reduced by 15%. Now ये जो death sentence याको रखिबाटा whether how far it is justiciable doesn't it violate article 21 right to life बा जदि हमें कहिबा हमको तो जीवन दबार अधिकार नहीं त जीवन हमें काहे कि नउचे this is a human right means by virtue of a human this right has been conferred to us by virtue of a human this right has been conferred to us that is why it is known as a human right. Now in case of violation of human right बा जदि ये आको हमें देई परने गोटे जीवन ताल जीवन नवा पछरे माने कोन what are the arguments in favor as well as against death sentence हमें देखिबा. So in favor रे कोन रहउची ना ये in favor रे कहउची it will create fear in the mind of accused बा जो माने क्राइम करूतन जो माने क्रिमिनल से माने को मन रे ये fear रखियो fear in the mind of criminal ये क्रिमिनल मानन को मन रे fear create करिवो कि ए टाइप रो क्राइम न करंत बोली फ्यूचर but it will just like a message to the entire world to the society that the government or the state or the society is not going to tolerate any type of heinous crime against anyone. Maybe no discrimination on the ground of rich or poor, no discrimination on the ground of sex, religion, caste, creed, कोनोसी प्रकार religionity देखा जीवन में कोनोसी प्रकार discrimination होगा. So heinous crime against any human being will not be tolerated by the state. So this is a very clear cut message by the when a court of law awards death sentence. इला most important point. And what is against death penalty? against रे कोन कोआ जाउची ना against रे बहुत कथा कोआ जाउची ताको रिफॉर्म करा जाउ death sentence को rarest of rare case रे दिया जाउची. So many countries they are talking about abolishing the death sentence को हटेया पई कहउचन काहे कि एटी कहिवार अर्थ होउची जदि हमको जीवन दबार अधिकार नाही ताले हम जीवन नउचे काहे बुझिउची कि नहीं. So बहुत basic concept. So this is against death sentence but death penalty against it. तापर हम आसीबा ए पर्यंत कोन रिफॉर्म अछि डेथ पेनल्टी गोटे कमिटी हेतिला जार नाउ जस्टिस वर्मा कमिटी 2012 मसिया रे आसिला जस्टिस वर्मा कमिटी ये रेकमेंड कले कोन ना अगेंस्ट यूजिंग द डेथ सेंटेंस इन रेप केसेस स्टेटिंग दैट इट इज इनइफेक्टिव एज अ डिटरेंट. कोन कहले ये होची इनइफेक्टिव ये काहे कि ये कमिटी कहा ऊपर हाईलाइट कला ना ये कमिटी हाईलाइट कले कॉम्प्रिहेंसिव लीगल एंड प्रोसीजरल रिफॉर्म फॉर टाइमली जस्टिस दवा पई ये कहउचंदी कि कंटीन्यूअस बा ये कहउचंदी कहा पर फोकस करचंदी पर्टिकुलरली प्रोसीजरल रिफॉर्म जो एते लेट पर्यंत चालुची केस गुडा जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड मोस्ट ऑफ द इंपोर्टेंट इश्यू एसोसिएटेड विथ द इंडियन जुडिशियल सिस्टम. सो गोटे केस देखिए बहुत दिन धरि दीर्घ दिन धरि की चालुची. सो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड कोन कहले एठी जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड. So this committee highlighted the importance of comprehensive legal and procedural reform. Then Law Commission of India तांकर 262 second report रे कहले to abolish death penalty for all type of crimes except terrorism related offense and waging war against the state. दीटा जिंस को Law Commission of India छाडी देले होटला terrorism related offense जेमती पार्लियामेंट अटैक हेतला बा जेमती अफजल गुरु ऊपर समस्त जानिथि तार स्टोरी जानिथि सेमती याव कहा पर कहउची terrorism related offense and waging war against the state. So it argued that the death sentence is no more effective at deterring crime than life imprisonment. यदि हम क्राइम को डिटर करिया पई चाहूचे क्राइम न होवा पई चाहूचे ताले तांको लाइफ इंप्रिजनमेंट दे दियो आजीवन कारादंड दियो डेथ सेंटेंस दवार कोन से आवश्यकता नाही. सो आजीवन कारादंड देला बेले मध्य it will give a very strong message to the society we are not going to tolerate any type of crime against any human being. So law commission यहाँ पर फोकस कर ले law commission फोकस कर ले procedural reform ऊपर to address different concerns like insufficient legal representation, court error, biasness in the use of death penalty यहाँ पर discussion कर ले. So recently समझते जानी चे जो तीनटा criminal law हमर थिला CRPC, IPC evidence act has been replaced. रिप्लेस होला पर एटी अछि हम पाकर कोना भारतीय न्याय संहिता 2023 रे रिप्लेस कला इंडियन पेनल कोड को
and it provided death penalty for certain grave offenses. Now ये importance कहाँ पर दूची ना, it gives importance on compassionate and just criminal justice system. कहाँ पर compassionate and just criminal offense system. Then what are the alternative to death penalty? जदि हमें मृत्युदंड न दबा ताले मृत्युदंड बदल रे तार अल्टरनेटिव कोन हे पारे, तार अल्टरनेटिव ऊपर डिस्कशन करछि कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट. So life imprisonment without possibility of parole. So this is a very severe punishment. Parole माने जो समझ से बाहर को आसी पड़तला जेल रे थिला बेले मध्य on certain grounds, किछि ग्राउंड किछि दिन पई से बाहर को आसी परिबे on certain emergencies. तो ये कहूची लाइफ इम्प्रिजनमेंट रहइबो बट देयर विल नो parole. parole ले से बाहर को आसी परिबे नै. So ये डिस्कस करछि कहां पर ना अबाउट लाइफ इम्प्रिजनमेंट विदाउट parole. ता माने it shows the convict will be there in the prison for the lifetime. से बाहर को ही जते दिन पर्यंत पहुंची ताको जेल रे ही रहिया पड़ियो, पैरोल हबोनी कि से बाहर पास पड़े. So life imprisonment without parole is one of the alternative. आउ कोन देखु restorative justice approach. restorative justice approach रे कोन हुए ना बेसिकली विक्टिम एवं ऑफेंडर जे ऑफेंस करि थाए एवं जे विक्टिम जहा सहित क्राइम हेताए देखु तांका भीतर किछि गोटे रिकन्सिलिएशन हो, तांका भीतर किछि गोटे रिकन्सिलिएशन हो. सो जहा भी तार क्षति हेजी एटा किए दबा को चेष्टा करिवो, एटी ऑफेंडर जे ऑफेंडर ताको फुलफिल करिया को चेष्टा करिवो. बट बेसिकली कोन हो ना ऑफेंडर जदी हायर स्ट्राटा को बिलोंग करछि सोसाइटी रे ना से कहे मु क्राइम करिवि एवं ताको रिकन्साइल करिकि रिकन्सिलिएशन करिकि ताको समाधान करिया पई चेष्टा करि मु क्षतिपूर्ण करबे, मु क्षतिपूर्ण करदे मने कर से कहे मु गोटे लोक को मार देबि तार परिवार भरण पोषण करिवि थ्रू आउट द लाइफ. Now restorative justice system is approachable or is acceptable only when there is morality or ethics exist. Otherwise ताको implement करिवा it is quite difficult. ହେଲା. तो ये गला अबाउट डेथ पेनाल्टी पर समस्त लिखि परिबे जदि क्वेश्चन आसे या पर हम आगु मध्ये और डिस्कशन करियो, अनेक पॉइंट आसीबो, अनेक टॉपिक आसीबो. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑन डेमोग्राफिक एडवांटेज. इंडियन इकोनॉमी स्वीट स्पॉट. डेमोग्राफिक एडवांटेज कहला में कोन बुझुचे, इंडिया को यंगिस्तान बोली कहा जाए. काहे कि कहा जाए ना यंग पीपल मानकर नंबर इंडिया रे अधिक बा जोटा को हम कहूचे वर्किंग एज पॉपुलेशन. कोन कहूचे वर्किंग एज पॉपुलेशन केते रु केते ना 15 नु 65, 15 नु 65 ए माने कोन ना वर्किंग एज पॉपुलेशन. वर्किंग एज पॉपुलेशन जो माने हेले लेस देन 15 एंड मोर देन 65 ए माने कोन ना ए माने होतंदी नॉन वर्किंग पॉपुलेशन. ए माने के ना माने ले नॉन वर्किंग पॉपुलेशन हैला लेस देन 15 and more than 65 they are non working population. बुझेला. सो ये कहूची ए नंबर ता ना हम पाखरे इंडिया रे टिके अधिक सेत भाई इंडिया को यंगिस्तान बोली कहा जाए. दैट्स व्हाई इंडिया इज नोन एज यंगिस्तान. बुझेला. कोन कहूचा हमें ताको हमें यंगिस्तान बोली कहूचे बिकॉज़ यंग पीपल यंग लोक मानकर नंबर इंडिया रे. सो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन ऊपर जदी हमें फोकस करबा, इंडिया इज द वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ग्लोबली. एवं एटी प्रॉब्लम कोन फेस करिया पड़छि ना लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन. 63% पॉपुलेशन होछन इंडिया रा टोटल वर्किंग एज रा छ 63%, बट पार्टिसिपेशन केते ना 55% ओनली. ये आईएलओ डाटा मु कहछि ऑथेंटिकेट डाटा को सब आंसर शीट रे लिखिबे टू मेक योर आंसर मोर यूनिक. आंसर को अधिक यूनिक करिया पई आपण आईएलओ रो कोन अछि डाटा, डब्ल्यूएचओ डाटा, आईएमएफ डाटा, आरबीआई डाटा बट डिफरेंट मिनिस्ट्री डिफरेंट कन्वेंशन डाटा को यू कैन यूज इन द आंसर शीट. सो ये कहछि इंडिया रा 63% पीपल दे आर इन द working age population, but actual participation is only 55%. Now rest 8% को हम एठी ऐड कर पाई. तो डेमोग्राफिक डिविडेंड को प्रॉपर्ली यूज करिया पछरे बेसिक कारण कोन काहे कि हम डेमोग्राफिक डिविडेंड को यूज करिया पई चाहू को कारण पे हम डेमोग्राफिक डिविडेंड को यूज करिया पई चाहू छे. मोस्ट इंपोर्टेंट होची वी नीड टू मेंटेन और एक्सेलरेट ग्रोथ. हमको ग्रोथ एक्सेलरेट करिया पई पड़िबो. कोन चाहू छे हमें ग्रोथ को एक्सेलरेट करिया पई चाहू छे बा ग्रोथ बढ़िया पई चाहू. मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ना ग्रोथ बढ़िबो केते बेले ना होय जते बेले पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कफोर्स विल इंक्रीज. बस हम कहबे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इंक्रीज कले ऑटोमेटिकली ग्रोथ हबो. कोन हबो ना ऑटोमेटिकली ग्रोथ हबो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ता इंक्रीज कले बिकॉज़ दे विल ऐड टू जीडीपी. से माने कोन करबे ना दे विल ऐड टू जीडीपी. से माने किछ ना किछ ऐड कर चलबे काहू ना जीडीपी.
सो जीडीपी करिया पई इंक्रीज करिया पई हेले बा ग्रोथ बढ़िया पई हेले हमको कोन करिया पई पड़िबो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट को इंक्रीज करिया पई पड़िबो नाउ रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट नाउ रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इटा इंक्रीज करिया पई पड़िबो काहे कि डेमोग्राफिक डिविडेंड बा बेसिकली जदि हम देखिया ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कोन कहली दरकार हमको नाउ वी नीड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्लियर कोन दरकार हमको नाउ वी नीड मोर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट केते बडा हवा जेतरा हम अधिक और अधिक हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करबा एजुकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करबा एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड करबा एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड करबा हला सेते बडा कोन हबो ना ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हे परिबो सो स्टेट गवर्नमेंट रो रोल एटी रिफॉर्म हवा दरकार स्टेट गवर्नमेंट रो रोल रिफॉर्म हवा दरकार सेते बडा ही हम डेमोग्राफिक डिविडेंड रो प्रॉपर यूटिलाइजेशन करि पारिबो नाउ नीड फॉर लेबर इंटेंसिव ग्रोथ ता माने जोटी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन हबो जेमि वर्तमान देखुचे बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग लेबर फोर्स बा लेबर मान को रिक्वायरमेंट कमी जाउची को लेबर इंटेंसिव ग्रोथ जोटी लेबर अधिक यूटिलाइज जदि हम एक्चुअली देखिबा एम्प्लॉयमेंट बहुत अछि बट एम्प्लॉयमेंट अनुसार हम पाखे स्किल सेति नै स्किल्ड लेबर सेति नै सो लेबर इंटेंसिव ग्रोथ रा आवश्यकता अछि जोथरे लेबर मानकर यूटिलाइजेशन हो देन वी नीड स्ट्रक्चरल चेंज कोन टोटल जति कि प्राइमरी तीनटा सेक्टर अछि हम पाखे समस्त जानते प्राइमरी सेक्टर then in secondary sector and tertiary sector primary sector क्या आसुतला ना primary sector आसुतला agriculture and allied agriculture then secondary sector is about your manufacturing sector and industry tertiary sector is the service sector so India जदि हम देखिया more than 50% is workforce they are in primary sector ये जो 50% वर्कफोर्स शिफ्ट करियो कोटी की माइग्रेट करियो कोटी की टू सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर दे विल माइग्रेट टू टर्शियरी एंड सेकेंडरी सेक्टर ताको हम कहते स्ट्रक्चरल चेंज कोन कहते हमें कहते दिस इज नोन एज स्ट्रक्चरल चेंज हैला देन नेक्स्ट इज स्किल डेवलपमेंट मोस्ट इंपोर्टेंट नाउ स्किल डेवलपमेंट पे हम पाके डिफरेंट स्कीम अछि गवर्नमेंट रो लाइक प्रधानमंत्री योर कोन सेटा थिला दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना स्किल डेवलपमेंट है रूरल स्किल डेवलपमेंट करिया रूरल रीजन मान सो जॉब तो अच्छी हम पाखे बट से स्किल्ड लेबर ना एम स्किल करने हमको कौन करिया पड़िबो ना स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करिया पड़िबो देन इंपैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग यार इंपैक्ट जेतबे पडुची हम देखले जॉब कमी जाउची जॉब कमुची ठीक अछि बट सही वे जदि हम टेक्निकली डेवलप कर दवा टेक्नोलॉजिकली जदि हम एमन को डेवलप कर दवा कहा वर्कफोर्स को देन ऑटोमेटिकली दे विल गेट सर्टेन जॉब automatically they will get certain jobs so it is skill development also important aspect chalo next topic ko jiba next topic on Indo-Pacific partnership for maritime domain awareness so it is a significant initiative kaha bhitere na jota ko hame quad countries कहउचे quad countries किए ना India Australia Japan and United States प्लस अदर रीजनल पार्टनरशिप भी दिया यार ऑब्जेक्टिव कौन यार ऑब्जेक्टिव होची मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस को इंक्रीज करियो ये कौन करियो ना इट विल इंक्रीज मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस सो लाइक इलीगल फिशिंग जदी होची स्मगलिंग होची जदी कोन से इलीगल एक्टिविटी होची बा कोन से डाटा शेयरिंग होची सो मैरीटाइम रूट देकी ना बहुत गुडे इलीगल एक्टिविटी हिता है जेमति कि टेररिस्ट एक्टिविटी हम कहवा जे कहा जाय कि मुंबई टेरर अटैक समय रे जदि मुंबई टेरर अटैक हेतला as per media intelligence as well as media report and intelligence report से माने infiltration को थ्रू करथिले थ्रू द मैरीटाइम रूट सो मैरीटाइम रूट रू हमको अनेक गुडे रिसोर्स मिले इंडिया 7500 किलोमीटर कोस्ट लाइन जदी हम कहबा it acts as a resource for us and simultaneously it creates security threat for us in the same way maritime route रे illegal fishing smuggling illicit activity को बंद करिया पई data sharing को बंद करिया पई maritime domain awareness रा आवश्यकता अछि then integration of different regions so to connect Pacific island to connect Southeast Asia Indian Ocean region into cohesive maritime security framework
ये होची डिफरेंट रीजन को आमे कोन करछ ना वी आर ट्राइंग टू इंटीग्रेट ऑल दोस थिंग्स, वी आर ट्राइंग टू इंटीग्रेट ऑल दोस थिंग्स, देन रूल्स बेस्ड ऑर्डर यार ऑब्जेक्टिव होची इंटरनेशनल मैरीटाइम नॉर्म्स, इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ को मानिबा, इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ को मानिबा हैला। इट गोटे इंपोर्टेंट कन्वेंशन ऊपर कहूची, दिस इज होमवर्क फॉर यू, एटा होमवर्क जदि आप डाउट आसे मते पचारिबे कमेंट सेक्शन में, मु आंसर देबी बा नेक्स्ट क्लास रे आप डिस्कशन करी। उनक्लोज 1 and 2 यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सीज, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सीज, एटा समस्त पढ़ी के आसीबे, यदि डाउट आसे मते पचारिबे, मु नेक्स्ट क्लास रे ई टॉपिक टा प्रथम डिस्कस करिबी। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सीज, एटा गोटे इंटरनेशनल कन्वेंशन, याको पढ़िबे, डाउट हेले पचारिबे। सो जो कंट्री देखु आमे ये सेप्टेम्बर 21 2024 रे तांगर फोर्थ समिट करछन कोना विल्मिंगटन रे तांगर फोर्थ समिट करछन। सो एमानकर एजेंडा कोन, 16 वर्किंग ग्रुप्स, दे आर एड्रेसिंग डिफरेंट टाइप ऑफ इश्यूज लाइक क्लाइमेट चेंज। नाउ क्लाइमेट चेंज ऊपर एमाने फोकस करछन। नाउ ओशियन जदि हम देखिबा एक्वाटिक एनवायरनमेंट, aquatic ecosystem, this is a part of the climate. Now climate change रो impact मध्ये यहाँ पर पड़ुची लाइक ओशन एसिडिफिकेशन हला आपनकर बा ओशन जो aquatic animal अछंदी से एनिमल मानकर लाइफ प्रति थ्रेट हला, से एनिमल मानकर लाइफ प्रति थ्रेट हला, कोरल रीफ, डेथ ऑफ कोरल रीफ्स। सो क्लाइमेट चेंज रो इम्पैक्ट aquatic ecosystem ऊपर मध्ये पड़ुची। देन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी लाइक मुगल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस, रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस ये टाइप रो टेक्नोलॉजी को हम यूज करि परिबा डाटा शेयरिंग पई। देन इज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी, डिफरेंट रीजन को ये कनेक्ट करिया पई कहूची, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करिया पई कहूची। को टाइप रो ना मैरीटाइम रूट बा मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें डेवलप करि परिबा। कोन करि परिबा कहली, मैरीटाइम रूट बा मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें एठी डेवलप करि परिबा, बुझियला, मोस्ट इंपोर्टेंट। देन हेल्थ, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, डिजास्टर रिलीफ, हेल्थ केयर सेक्टर को हेल्थ प्रोवाइड करि परिबा, डिजास्टर टाइम में रिलीफ प्रोवाइड करि परिबा लाइक सुनामी। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस कोन ना जो रीजन ने डिस्टर्ब रीजन ने तो ह्यूमन राइट्स वायोलेशन हुए ताको हम ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बोली कहउछे। फॉर एग्जांपल होची करंट सिचुएशन इन गाजा स्ट्राइक। सो बिकॉज ऑफ अ प्रोलॉन्ग्ड क्राइसिस बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टाइन, गाजा स्ट्राइक रे हम सिवियर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस देखिया पई मिलुछ हैला। सो एठी हम देखिले ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को रिड्यूस करबा, डिजास्टर रिलीफ प्रोवाइड करियार होच्यार बेसिक ऑब्जेक्टिव। देन इज मैरीटाइम सिक्योरिटी, आ कोन करबो ये ना मैरीटाइम सिक्योरिटी प्रोवाइड करियो। मु डिस्कस करली एठी मैरीटाइम सिक्योरिटी ऊपर, आई हैव डिस्कस डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मैरीटाइम सिक्योरिटी, जोटी हम कहा ऊपर पढिले ना हमर ऑब्जेक्टिव कोन ना हमर ऑब्जेक्टिव होची मैरीटाइम रूट थ्रू रे कोनोसी प्रकार इल्लीगल एक्टिविटी बा टेररिस्ट एक्टिविटी न हो। देन इज काउंटर टेररिज्म, काउंटर टेररिज्म रो अर्थ कोन, टेररिज्म को रिड्यूस करबा बा काउंटर टेररिज्म रे हमें देखु टेकिंग डिफरेंट स्टेप्स टू कॉम्बैट टेररिज्म, बट टेररिज्म रो इंपैक्ट जेमति न पडू बा मैरीटाइम रूट को टेररिस्ट माने जेमति यूटिलाइज न करो। नेक्स्ट टॉपिक को जीवा, टॉपिक नंबर 8, बीइंग ट्रांस इज बीइंग ह्यूमन। या आपनकर इंडियन सोसाइटी रो आसुची, ट्रांसजेंडर ऊपर अछि टॉपिक, इंडियन सोसाइटी रो आसुची, सोशल जस्टिस रे मध्य ये टॉपिक हमें पढ़ी पारि। नाउ प्रॉब्लम कोन, ट्रांसजेंडर माने एग्जैक्टली कोन प्रॉब्लम फेस करछन। पूर्वर मेल फीमेल थिला, ट्रांसजेंडर बोली किछि गोटे माने दे आर नॉट एक्सेप्टेड, दे आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड, सोसाइटी वाज नॉट रिकॉग्नाइजिंग देम, बट नाउ इट इज रिकॉग्निशन मिलुची हैला। सो कोठी मिलुची मु डिस्कस करी वर्तमान। तो प्रॉब्लम कोन ना, चैलेंजेस इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड सोसाइटी, वर्क प्लेस रे डिस्क्रिमिनेशन ट्रांसजेंडर मानको। सो दे आर harassed, they are molested, many times there are cases of rape, educational social discrimination, society discrimination, पाठ पढ़ी करूनांती, poverty, they are suffering from high incidence of poverty because lack of access to education, healthcare facility थिबा कारणरू जॉब नाही सेमान को पखे, so automatically they are suffering from high incidence of poverty. then healthcare facility को तांको access नाही, एवं जदि भी अछि now different type of जदि कोनसी reproductive health related issue होची, then the problem is को डॉक्टर पाक जिबा को प्रॉब्लम, डॉक्टर पाक जदि भी जाउछन दे आर harassed बा प्रॉपर्ली को डॉक्टर्स मन ट्रीटमेंट करिवो, ई सब दीज आर डिफरेंट इश्यूज। देन इज लीगल प्रेसिडेंट कोन, सुप्रीम कोर्ट जदि हम लीगल प्रेसिडेंट देखिबा, सुप्रीम कोर्ट रो पुराना जजमेंट कोन अछि, पुराना वर्डिक्ट कोन अछि। देखो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑलरेडी रिकॉग्नाइज
right of transgender already हम recognize कर सकते कौन ना transgender rights, so they can marry under existing laws, so a heterosexual relationship is allowed है ना. Now what about reservation issue जदि हमें देखिबा like different categories are like SC ST your Roman OBC, but there is no separate reservation for transgender category, but Odisha government मन रखतान से उनको OBC जो हम SC BC कहू ओडिसा रे से मान्यता दे सारी. तो जदि एमानकु राशन कार्ड मिली परिबो बा बीपीएल रे माने काउंट हेबे ऑटोमेटिकली तांको फूड सिक्योरिटी अचीव करि परिबा, तांको खाइबा मिली परिबो, देन दे कैन गेट रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज गवर्नमेंट एग्जामिनेशन जहा सेतिर मध्ये रिप्रेजेंटेशन पाई परिबे. So first time पई 2011 सेंसस रे is the first census in the history, it incorporated the number of trans population of the country. ये trans population केते डिफाइन कर. So ये देखला कि 4.8 million Indians they are transgender. 4.8 million Indians they are transgender. ताले एटी क्वेश्चन कोन आसीबो? एटी क्वेश्चन आसीबो ट्रांसजेंडर माने एक्जेक्टली कोन प्रॉब्लम फेस करछन, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग. ट्रांसजेंडर माने एटी एक्जेक्टली को टाइप रो प्रॉब्लम फेस करछन एवं सॉल्यूशन मन रखते जो आंसर लिखुं प्रॉपर स्ट्रक्चर लिखिए आम आंसर राइटिंग ऊपर डिस्कशन करवा ग्रेजुअली गोटे पर गोटे टाइप ऑफ क्लास आनिबा आमे. आंसर एना आपनकर गोटे इंट्रोडक्शन पार्ट रहिबा दरकार. इंट्रोडक्शन पार्ट परे आपनकर गोटे बॉडी पार्ट इठी रहइबो. बॉडी पार्ट परे आपनकर कंक्लूजन रहइबो. बॉडी पार्ट परे कोन रहइबो कहली ना कंक्लूजन रहइबो. ये बॉडी पार्ट को दी भाग रे डिवाइड करि परिबे आपन चाहिले. गोटे होउची किछि गोटे पैराग्राफ लिखंदु एठी, one paragraph and bullet point बा कोनोसी any type of diagram एटी करि परिबे है ना. so this is the structure कोन कहली एटा होचे हमर बेसिक स्ट्रक्चर. सो आंसर लिखला बेले एई स्ट्रक्चर बा एई फॉर्मेट को फॉलो करिवे, एई फॉर्मेट को फॉलो करके आंसर लिखिवे. सो बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक ऊपर आज हम डिस्कशन कले. ई सब टॉपिक को आपण कंप्रिहेंसिवली पढिबे এবং मोस्ट इंपोर्टेंट तार नोट्स तैयारी करिवे. जदि किछि डाउट आसे देन लेट मी नो थ्रू द कमेंट सेक्शन. मो नेक्स्ट क्लास परबो आपण डाउट क्लैरिफाई करबी तापर. सो दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन. आई विल डिस्कस मोर इन द नेक्स्ट क्लास. जहां हमर मिसिंग हेतला मझिरे हम गोटे दिटा क्लास करि पार नथले बिकॉज़ ऑफ सम प्रॉब्लम बिकॉज़ ऑफ हेल्थ इश्यूज मु नै पार नथली किछि क्लास. हम सेटा को कवर करबा इन द अपकमिंग सेशंस. ग्रेजुअली मु कवर कर देबी सब क्लास. So that's all for this session. Thank you very much. Thank you everyone.